Hello children, today we will start chapter 8 Fun with Text Typing. Fun with Text Typing. Student, text typing is a free and open source typing tutor. This is basically created for the small children for learning the typing. They can learn in this text typing through this typing tutor. Okay, so first of all, how we will open it? There are two ways to open the text typing. On the taskbar you will find here text typing icon. Okay, you can click on it to open the text typing. Otherwise on the desktop you will find here text typing icon. You can just double click on it to open it. Okay, so as you will double click on it, this text typing window will appear. Okay, in this typing window you will find here these are games, Fish Cascade and Combat Zap. These are the games. You can learn the typing by playing the games also. And there are here lessons. So I will click on the lessons, and on this option you will find here many lessons. These lessons, there are 43 lessons in this text typing for learning the typing. Okay, so first of all I am going to open lesson number 1. Okay, as I will click on the lesson number 1, in this window I will find here the A key. It means the A key. We will learn here A key. In this lesson you will be learning where the A key is located. इस लेसन में हम क्या सीखेंगे कि आपके कीबोर्ड में A की कहाँ होती है. ओके, एंड देन वी विल प्रेस स्पेस टू स्टार्ट द लेसन. उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्पेस बार. आपने कीबोर्ड पे स्पेस बार की देखा है? यस, दैट स्पेस बार की वी विल प्रेस टू स्टार्ट द लेसन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्पेस बार की फ्रॉम माई कीबोर्ड. ओके, नाउ in this window you can see here in this exercise we practice the A key. To start practicing, hit the P key. It means after space bar, for practice we are to press P key from the keyboard. So I am going to press here P key. Okay, as I will press the P key, okay, first of all I will check here the caps lock is on or off. कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, हमें इसको कंफर्म करना है. बिकॉज अगर आपका कैप्स लॉक ऑन हुआ इट मीन्स इट विल टाइप इन कैपिटल लेटर्स, जबकि हमें यहाँ पे स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो कैप्स लॉक शुड बी ऑफ. कैप्स लॉक की शुड बी ऑफ. ओके, एंड इस लेसन से हम क्या करेंगे, हम हमारे फिंगर्स को यूज करते हुए कैसे टाइपिंग करना है वो सीखेंगे. ओके, इससे हमारी कितनी स्पीड बढ़ेगी, इस लेसन की प्रैक्टिस से हमारी फिंगर्स की कितनी स्पीड बढ़ेगी वो हम इस लेसन में सीखेंगे. ओके, सो एंड जब भी आप टाइपिंग करेंगे, वन थिंग यू आर टू बी कीप इन योर माइंड दैट व्हाइल टाइपिंग यू आर टू सी ऑन द मॉनिटर. जब भी आप टाइप करेंगे आपको मॉनिटर पे देखना है, डोंट सी ऑन द कीबोर्ड. ओके, जब आप मॉनिटर पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप टाइपिंग के टाइम पे कौन सी मिस्टेक कर सकते हो. ओके, सो डोंट सी ऑन द कीबोर्ड, जस्ट सी ऑन द मॉनिटर एंड प्रेस द कीज फॉर टाइपिंग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस टाइपिंग. I'm going to start practice typing. Okay, now on this screen we will find here time, characters, CPM, character per minute, WPM, word per minutes, errors, if we will find here errors, and then accuracy. Okay, all these items basically tells, हमें बताते हैं that how we are doing the typing. हम अपनी टाइपिंग को कैसे कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, सो टू टाइप this small A letter, first of all it is showing here one blinking. These are the fingers ना,
You know, this is baby finger, this is ring finger, this is middle finger, okay, this is index finger, and this is thumb. So first we will use here baby finger, then after we will use here thumb. Okay, baby finger for typing A and thumb we will use for space. Okay, okay, so I am going to press here baby finger for typing. I am just seeing on the monitor that what should I to type. मुझे क्या टाइप करना है, स्मॉल a. So I am pressing from the keyboard using this baby finger. Using this baby finger. So type, press A, A, A. Then you can see here your cursor start blinking on the thumb. It means आपको right hand के thumb से space bar press करनी है. आपने A किससे press किया है, लेफ्ट हैंड के बेबी फिंगर से. ओके, एंड नाउ राइट हैंड के थंब से आपको प्रेस करना है स्पेस बार. सो प्रेस हियर वन टाइम स्पेस बार की. नाउ अगेन यू विल सी दिस फिंगर स्टार्ट ब्लिंकिंग. ओके, सो अगेन यूजिंग द बेबी फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड प्रेस 3 times A, 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 A. Then one more space here. Using the right hand press space bar. Okay, in this way you can do typing A, A, A. Using thumb of right hand press space. Then again A, A, space, A, space. Okay, so in this way you can continue the typing. Now you will see here is A and S. So type here A, and for S which finger you will use? You will use here this ring finger. You will use here ring finger for typing S. So I am using my ring finger and I am pressing S from the keyboard. Okay, now again press the thumb for space. Okay, now again it is start blinking on the baby finger. So A, then again ring finger, S, baby finger, A, again ring finger, S, and space. Then S, A, space, A, S. Okay, so in this way you can do typing. Okay, you just see on the monitor and continue your typing practice. So in this way you can type A letter in this lesson. Okay, I am just typing for you as we will reach at the end. A, S, A, space, A, S, then space. Okay, then again A, S. So students, in this way you can complete your lesson number 1. As you will finish your lesson number 1, you will find this message that great job. It means you have done well. आपने बहुत अच्छा किया है. Okay, to go back to the main menu, you can press space or you can press escape key. Okay, so I am going to pressing here space. So you will come back to the main menu. Now you can start again next lesson from here. You can start again next lesson from here. If you don't want to continue, you can press the escape key. You can press the escape key to go back. Okay, that's all for today. Thank you.